डिड यू रीड दिस न्यूज़? पढ़े लिखे हो ना, यही तो पंगा है। You know, two very important points which are given already in the highlights. Going by how caste groups perform on education levels, occupation and income, the gap between marginalized caste and general category has shrunk considerably. The gap between marginalized caste and general category has shrunk considerably. And the second one, a large chunk of lower caste communities is stuck in the low income states. I repeat, a large chunk of lower caste communities is stuck in the low income states. This impacts their economic well-being. Actually, this was a news in today's Economic Times, and not only is important from your general studies point of view, but the comparison that is done from general category SC, ST, OBC, it becomes universally important. And I want to put it deliberately for one more thing, कि कल अखिलेश यादव ने फिर से रिपीट किया कि रिजर्वेशन तो कास्ट बेस्ड ही होना चाहिए. और दिस काइंड ऑफ रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कास्ट, ऐसी स्टैटिस्टिक्स के साथ भी, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए साहब हैं, ऐसे ही सारी पार्टीज के लोग हैं. यू जस्ट लुक एट दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन पीपल रिसर्च on India's consumer economy. Price is the name of this organization, and they have India's consumer economy ICE survey 2014, 16, 21, quite comparatively statistics you can say. And what is their observation? India's estimated 1.4 billion people, nearly 44% belong to the OBC group. So that fallacy that is thrown, that is 52%, वो तो गलत हो गया. वैसे भी कई सर्वेज हैं 40 to 44% वाले, सो लेट इट बी ओके. लेकिन इसमें ध्यान रखना, व्हेन यू टॉक अबाउट ओबीसी, इसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम खास तौर से जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. क्यों, वो मैं बताता हूँ अभी. द शेयर ऑफ द जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन इज 24%, SC is 23%, that's quite significant, very high, and ST is 9%. क्योंकि जब हम टोटल करते हैं तो दैट बिकम्स 100%. सो इट्स नॉट जस्ट हिंदूज ओनली, ऑल द कम्युनिटीज आर इंक्लूडेड. व्हेन यू से जनरल कैटेगरी, इट इंक्लूड्स क्रिश्चियंस एंड पारसीज एंड मुस्लिम्स एंड ऑल दोज ऑल्सो. सो 9% tribals and 23% SCs, quite a significant number. And even when they say OBCs are 42%, different states में it is different. तमिलनाडु 68% OBC, वो तो शुरू से चला आ रहा है और उनको अलग से जो है रिजर्वेशन भी उतना ज़्यादा मिला हुआ है 69% का. फॉलोड बाय बिहार 64%, अभी सर्वे हुआ था 63% वो बता रहे हैं. यूपी 51%. So that way the survey seems quite genuine in terms of what the government is saying and what this sample is saying. Then PM Kisan Samman Nidhi, out of every 100 rupees disbursed, that means in terms of percentage, OBCs को मिलता है 54%, पॉपुलेशन है 44%. जनरल कैटेगरी 21%, SCs 20%, STs 5%. सारे सीक्वेंस में आप देखेंगे कि STs को मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गेटिंग मच लेस, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट STs. अब SCs का 23% अगर पॉपुलेशन है और 20% मिल रहा है, और OBCs को तो 44% है और मिल रहा है 54, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है. और फिर भी हंगामा. स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, विडोज एंड फिजिकली डिसेबल्ड, 47% बिलोंग टू OBC. अगेन कंपेयर टू 31% SCs, फिर भी ज़्यादा है. जनरल्स का कम हो गया, STs का अगेन ओनली 4%. मनरेगा लार्जेस्ट ग्रुप OBC 38%, थोड़ा कम हो गया, फॉलोड बाय SCs बहुत बढ़ गया. जनरल कैटेगरी एंड STs 15 एंड 10% अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज के हिसाब से. अंशुमन भारत योजना
53% OBCs, followed by 44% SCs, 2% general category and 1% ST. Again, these data show the better governance and power implementation वगैरह. If you talk about top 20% income quantile, middle class and wealthy, general category is 28%, OBC is 18%, 14% SCs and 15% STs. We do not find much difference, much major difference. And bottom 20% income quantile dominated by 28% STs. Bottom is highest among STs and 24% SCs, just slightly lower, followed by 22% OBCs, again slightly lower, and general category 18%. The assumption that counting the poor is synonymous with counting the lower caste groups no longer holds true. They have been crying that weaker sections in terms of caste are weaker economically as well, and this is being debunked by this survey. At the lowest level of education, illiterate and primary, SCs and STs dominate with 50 and 56%. 50% SCs and 56% STs are either primary educated or not educated at all. So, what you require is to support these. The share of OBCs is 42% and that of general category is 31%. Class 10 and 12 grade, OBC is slightly less than GC, general category, 16 and 18, but 23% versus 25%, 18% versus 25% compared to other SCs and STs. This indicates that SC and ST groups still have some catching up to do. However, OBCs are almost on a par with the general category. और अगर सैलरी ग्रुप्स की बात करें एट द टॉप, जनरल कैटेगरी scores the biggest share 24%. This is the point being made by the people who blame Brahmanism. देखो हायर पोस्ट तो ब्राह्मणों के पास है, ब्राह्मणों ने क्या चंदे में लिए हैं यार. आपका जो पीएम है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड से आता है, तो वो क्यों देगा. आप वैसे भी हायरार्की में देख लो, नेहरू गांधी परिवार को छोड़ करके बीजेपी में अटल बिहारी थे, वो ब्राह्मण थे, बट ही नेवर बॉदर्ड अबाउट कास्ट. और मोदी जी का तो मतलब ही नहीं होता. बट स्टिल जस्ट 24%. OBC is at 20%, not much different. SC is 19%, similar again. ST 17%, again not far behind. Interestingly, the share of households that are self-employed in agriculture is almost equal for STs and general categories, 22% and OBC 20%. Self-employed in agriculture, it is the same. In SC household, 30% are headed by people who studied till class 12, compared to much higher 25% of the OBCs and 36% for the general category. This rose to 32% in general category, rose to 32% in 2021. While around half of OBCs and general category households in 2021 were headed by people who studied till class 12, the gap has fallen. The picture that emerges is not one of the significant deprivation of lower caste households. Conclusion क्या है? Gone are the days when lower castes were synonymous with poor community. The road to development and economic growth is no longer caste coded. The road to development and economic growth is no longer caste coded. And this is what we have been advocating right from the beginning, that if at all reservation has to be there, only it has to be based on economy and not the way they are doing, economically backward, 8 lakh rupees creamy layer and onwards, totally rash. Limit has to be in any case below the taxpayers. But still, as I have been advocating recently, best way would be रिजर्वेशन उन्हीं को दो जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन,
उनको रिजर्वेशन क्यों दें? आपको एससी भी नहीं चाहिए, आपको एसटी भी नहीं चाहिए, आपको ओबीसी भी नहीं चाहिए, आपको क्रीमी लेयर भी, कोई क्राइटेरिया रखने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली द पीपल हु पास थ्रू द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल थ्रू दे मस्ट गेट रिजर्वेशन। एक फ़ायदा तो ये होगा कि स्कूल्स की क्वालिटी सुधर जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जो जेन्युइन लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी। मुझे लगता है मेरी बात समझ गए होंगे आप। थैंक यू।